So now let's start your next topic, that is the beam. So first, uh, you have already studied about the beam and column in your previous classes. Okay, so let's start your beam once again. So first let's define what is the beam. So again it says the structural member, a structural member subjected to subjected to transverse load perpendicular to its longitudinal axis is called beam. ओके सो जैसे कि आपको बताया गया है कि दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हियर, ये आपका बीम है. नाउ दैट इज द सपोर्टेड एंड द सपोर्ट. ओके सो जो इसका ट्रांसवर्स लोड आएगा, सो दिस टाइप ऑफ मेंबर कॉल्ड बीम. ओके इसका प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज द सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स लोड परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज कॉल्ड बीम. When provided in building, they are called joist. Okay, so in building this is called the joist. Okay, so now next is the beam are most critical member in any structure. Okay, as you know, the total load of the building is totally that depend on the beam and the column. Okay, so what is the main mechanism? So first the load is transferred from slab to beam and from beam to, the mechanism is the load is transferred from the slab to beam and again from beam to slab, and now beam to column, and finally column to that is your, and from column to your foundation. Okay, so this is the mechanism. So first if you say what are the first critical section, that is the beam, now second is the column, and next is the foundation. So now here are the type of sections. So which type of section are used in the beam? So first you must remember, so read this, the angle and T sections are inherently weak in bending, while channel can only be used for light load. Okay, एंगल और टी सेक्शन होता है वो वीक होता है, बीम के लिए वीक सेक्शन माना जाता है. ओके और चैनल सेक्शन केवल लाइट लोड के लिए यूज हो सकता है. सो ए रोल्ड स्टील आई सेक्शन इज जनरली प्रीफर्ड एज ए बीम. तो क्या यूज हो सकता है, दैट इज द रोल्ड आई सेक्शन. ओके दैट इज द आई सेक्शन जनरली यूज फॉर योर बीम. द मोस्ट इफिशियंट एंड इकोनॉमिकल सेक्स आर द आई सेक्शन, आई शेप. सो आई शेप जो होता है वो मोस्ट इफिशियंट होता है और इकोनॉमिकल होता है, आइदर रोल्ड और बिल्ट अप. ओके सो ऑलरेडी डिफाइंड द, वी हैव डिस्कस्ड द बिल्ट अप सेक्शन. Built up sections, that is the made of the more than one members. So now as you know, so perhaps you have already read this, that is the m by I equal to, that is the bending equation, that is the bending stress equal to m by I equal to sigma by y, that is the bending equation. You have already read this. Okay, so now m equal to sigma bc into z. What is the z? That z is the I by y. Okay, so m equal to m equal to sigma bc into t into I by y. So I by y you can write the z. Perhaps you have already studied everything in your bending member chapter in your SOM. So m is the bending moment, I is the moment of inertia, and z is the section modulus. Z is the section modulus. So laterally supported beam. So for laterally supported beam in your syllabus, this is your laterally supported beam. So permissible stress in tension, that is the sigma bt, and the maximum permissible stress in compression sigma bc should not be greater than 0.66 fy. Okay, so now permissible stress in tensions sigma bt and maximum permissible stress in compression sigma bc should not greater than 0.66, or you can write sigma bc equal to 0.66 fy. So now next is, so now next is shear in beam. So tau Vm, so tau Vm is the maximum permissible shear stress, that is 0.45 fy. This is the maximum permissible. Fy is the yield stress. Now average shear tau Av, now you are going to find how to calculate, that is the, you are going to calculate tau Av equal to V upon d into Tw. Average shear stress, that is the V upon d into Tw. So V is the maximum shear, d is the depth, Tw is the thickness of wave, and Va is the average shear. So tau Va equal to, again the minimum shear stress in the beam, that is should not be less than 0.4 fy.
Okay, so now here tower AB should be lies between tower VN and tower VM. Okay, so 0.4 Fy as per IS 800 1984. So tower AV should not be less than tower AV should not be less than tower VA. Now deflection of beam. So as already we have deflection, del should not be less than span by 2. Okay, 325. Okay, del, that is the slend. Okay, so you must remember the deflection criteria. Del, that should not, then del should be less than del, that is the deflection in beam, should be less than span by 325. That should not greater than span by 325. Now effective length of beam. So as you have already calculated the effective length in your RCC, how to calculate. So effective length is the, what is the center to center distance. Center to center distance or clear length plus width of the support. Width of support. So you can write the clear length. Suppose that if this is your beam and this is the supported on the support. This is your beam and supported on the support. So this is your clear length. This is the L is the clear length. If the B is the width of the support, so here from here and from here. So this is your B. So यदि इसका हाफ लेंगे तो होगा B/2, तो इसका हाफ लेंगे तो दैट इज द B/2. So effective length L equal to capital L, that is the clear length plus B. Now next is here wave crippling. So what is the wave crippling? Okay, actually क्या होता है कि जब हमारा see that, okay, so load and reactions concentrate along a short length of flange of a beam are resisted by compressive stress in wave, which vary with distance from the load. The wave of rolled steel section are therefore subjected to large amount of stress just below the concentrated load and above the concentrated from the support. Okay, so now see that, suppose that this is your column, this is your beam, and now a load is applied, heavy load is applied. So first now here this is the flange, this is wave. So flange transfer your load to the wave, flange transfer load to the wave. So if heavy load, so what happens here, see that जब before transmitting, जब ये ट्रांसफर करेगा तो before transferring the load ये क्या करेगा, यहाँ पे जब ये लोड ट्रांसफ़र करेगा पूरे पे तो स्टार्टिंग लोड यहाँ पे आ रहा है. सो क्या करेगा, यहाँ पे हैवी लोड्स के चलते यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट कर जा रही है. सो दैट्स कॉल्ड योर वेव क्रिपलिंग. और नाउ हियर दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज एट सपोर्ट, दिस इज एट लोड, हियर दिस इज एट लोड. सो लोड जनरली ऊपर से आता है और सपोर्ट नीचे से जनरली नीचे से लगता है. तो जब सपोर्ट, जब हैवी लोड आ रहा है और उसको सपोर्ट करने के लिए तो क्या हुआ, सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा हैवी लोड आ रहा है तो वेव किस पे ट्रांसफ़र करेगा, फ्लैंज पे. तो चूँकि यहाँ पे जब लास्ट वाला मोमेंट आएगा यहाँ पे एरिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है तो इसलिए क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ी सी क्रिपलिंग होगी. सो नाउ फर्स्ट टू अंडरस्टैंड दिस वी हैव टू सी हाउ द लोड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस. सो दिस इज़ योर बी. ओके, दिस इज़ योर लोड. जब भी लोड लगता है तो आप, चूँकि आप भले ही पॉइंट लोड है, देयर इज अ सम एरिया, जब आप लोड ट्रांसफ़र होता है तो ये होता है बीम. ये आपका हो गया बीम और ये हो गया आपका जो भी लोड लग रहा है उसका एरिया. तो हमने पी लोड ट्रांसफ़र कराया तो यहाँ से देखो, सी दैट ये नाउ एट 30 डिग्री पे ट्रांसफ़र करता है. ये हो गया 30 डिग्री पे ट्रांसफ़र करता है. तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो जैसे जैसे हम नीचे आते रहते हैं, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वैसे वैसे इसका स्ट्रेस एरिया इंक्रीज होगा, विड्थ इंक्रीज होगा. और जब विड्थ इंक्रीज होगा तो हमें स्ट्रेस जो होगा वो कम हो जाएगा. और जब विड्थ इंक्रीज नहीं होगा, यहाँ पे स्ट्रेस P/B होगा और यहाँ पे जो होगा स्ट्रेस P/B1. ओके, सो दैट्स वाई हियर द वेव क्रिपलिंग अकर. ठीक है, क्योंकि हम जहाँ भी यहाँ पे लोड लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखो स्ट्रेस कम है. ठीक है, लोड ट्रांसफ़र कम है तो एरिया कम है. सो नाउ वेव क्रिपलिंग अकर. So force equal to stress into area. So stress equal to B into B1 into T1 TW, that is B is the width and T1 TW is the thickness of wave. Okay, so now force, see that here. So P equal to sigma BP into B plus 2H. So here, see that here at the last
how could P sigma P into B into 2H under root 3 into TW, that is thickness of wave. इसमें जनरली क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट here sigma equal just wait. So see that this is your most important. Again हमने कुछ नहीं किया है, that is the P, that is the total force equal to sigma P into B plus 2H2 under root 3 into TW. So sigma P equal to P upon B plus 2H2 under root 3 into TW. So this is your most important and you must remember this. Okay, so now next is here design of laterally supported beam. Design of lateral supported beam, this is your research syllabus. So let's see the syllabus in your beam. See that beam, that is the analysis and design of single section simply supported laterally restrained steel beam, and introduction to plate girder and function of various element of a plate girder. Okay, so this is your in your syllabus. So now next here, so design of laterally supported beam or laterally restrained beam. So these are the various steps. So first step, determine the expected load on the beam. So now first we are going to find how much load are coming on the beam. So that is totally depend on the building's type of building, type of load, that is the dead load, live load. So dead load, that is generally which purpose building are made. So purpose of building, okay. So there are the various type of building, that is the industrial building, educational building, hospital, etc. So based on that building you have to define the load. So there is the code, there are a different code for building. So now next is the calculate the maximum moment and the maximum shear force for the beam. So आप लोगों ने कैलकुलेट किया होगा सोम में, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोमेंट, कैसे मैक्सिमम मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, मैक्सिमम मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैक्सिमम शियर फोर्स कैसे निकालते हैं. नाउ द ट्रायल सेक्शन मॉडुलस. नाउ हियर द ट्रायल सेक्शन मॉडुलस फॉर द बीम इज वर्कड आउट. So now we are going to find the section modulus of the beam. So m upon sigma BC. So sigma BC equal to 0.66 Fy. So Z is the section modulus, m is the maximum bending moment. Okay. So now next we are going to solve the question. So let's solve question. So this is the question that is given in your book, that is the page number 2 to 5. एग्जाम्पल नंबर 7.1. यदि किसी के पास बुक ना हो तो अपने में शेयर कर लेना, फोटो खींच के वीडियो बना के, जो भी है. सो नाउ हियर लेट्स सी. सो हियर इट सेज 6 मीटर प्रभावी विस्तृत की एक सुधालंबित धरन के लिए एक ISLB 550 @0.830 किलो न्यूटन पर मीटर आई सेक्शन खंड का प्रयोग किया गया है. अनुगे बंकन प्रतिबल 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर लेते हुए धरन द्वारा वहन किए जाने वाला सुरक्षित समान वितरित भार UDL ज्ञात कीजिए. धरन पार्श्विक रूप से आबद्ध है. उक्त भार के लिए धरन में उत्पन्न औसत अपरूपण प्रतिबल एवं विक्षेप भी ज्ञात कीजिए. E = 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर. Okay, so first see that what has been given. So first the length has been given 6 मीटर, ISLB that is the 550. Okay, और जो इस पे है परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस दैट इज 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर. और क्या है ना, पार्श्विक रूप से आबद्ध है, जस्ट लेफ्ट. और ओके उत्पन्न वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू डिटरमाइन द एवरेज शियर स्ट्रेस एंड द डिफ्लेक्शन एंड द टोटल लोड और टोटल UDL ऑन द बीम. सो नाउ हियर, सो लेट्स राइट हियर द given effective length
effective length equal to 6 meter. So use ISLB 550. Okay, just wait. ISLB 550. Now permissible bending stress sigma BC equal to 165 Newton per mm square. Okay, so now partially restant. So now here, so first we are going by the table. From table, determine the properties, determine the properties of ISLB 550. ISLB 550. So here the load, here the load is the 0.863 kilonewton per meter. Depth equal to 550 centimeter mm. 550 mm. 550 mm. Now wave, width of wave, that is the TW equal to 9.9 mm. IXX equal to 5316 1.6 centimeter per 4. ZXX equal to 1933.2 centimeter cube. Okay, so now next we are going to calculate from the bending equation. From bending equation, what is the bending equation? M by I equal to sigma by y, or M equal to sigma into I by y, or you can write sigma into z. Z is the section modulus as already derived. So here z had been given, so you can find the m. Z given, so what is the value of z? That is ZXX, that is the 1933.2 centimeter cube. Okay, so here m equal to sigma BC into z. Okay, z, so 165. So here see that sigma BC equal to 165 Newton per mm square, and now z equal to centimeter square, centimeter per 4. Okay, so now we have to convert everything in a single unit. So z equal to z, so this is your 1933.2 centimeter cube. So now 1933.2. okay, so 1 mm के 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, सो मल्टीप्लाइड बाई, सो 10 पावर 3 मतलब, ओके, दैट इज द सेंटीमीटर क्यूब, mm क्यूब टू सेंटीमीटर, तो 10 पावर 3 कर देते हैं. सो वी आर गोइंग टू फाइंड